You studied a whole year for your board exams, sacrificed a lot to get good marks. But how about I tell you, you are still lacking. Writing your answer not in the proper way can surely get you less marks from what you really deserved. Presenting your answer sheet during your exam is as important as knowing the answer. So this video is a complete package of do's and don'ts while writing your answers in board exams. So hi everyone, I am Srishti Sinha. This video is not only for board exam students. Any student appearing for subjective exam can watch this video. अगर ये वीडियो एंड तक देख ली तो फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. So before this, I want to burst a myth. So there is a myth. Your exam result depends on the mood of the examiner. Yes, of course. But बच्चे इसे गलत पर्सपेक्टिव से देखते हैं. उनका मूड तुम्हारी आंसर शीट पे डिपेंड करता है, ना कि उनके कोई पर्सनल रीजंस. तो अब आगे बढ़ते हैं. So point number 1 is make use of those 15 minutes wisely. You get 15 minutes before writing in your answer sheet. During this time, recapitulate the important concepts and tricks and decide how much time you are going to dedicate in each sections. Be ready with your paper, pencil, eraser and everything else which is needed during your exam. Point number 2, always wear a watch. Try to avoid smartwatches as it is not allowed in every exam center, so better you don't take any risk. Always keep an eye on your watch to monitor how much time you are left with. Point number 3, drawing columns on both sides of the answer sheet. If your answer sheet looks like this, then you do not need to draw any columns. In case your answer sheet looks like this, then you should draw columns on both sides. The width of the column can be between 3 to 4 centimeter. Point number 4, highlight question number. अपना क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखो ताकि एग्जामिनर का ध्यान अपने आप चला जाए, उसे अलग से ढूंढना ना पड़े कौन सा क्वेश्चन है. I used to do like this. You can do the same. Point number 5, order. ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है. You can start from backward also. In subjects like English, Hindi, SST, last sections carry high weightage questions. 5 markers, 10 markers. So better you start attempting your paper from last section. मैंने अपने मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में लास्ट से पेपर अटेम्प्ट किया था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे नंबर घटे. आई गॉट 95. ऐसा मत करो कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, फिर डायरेक्ट 6 पे जंप कर गए, फिर 3 पे आ गए, फिर 4 पे आ गए. यू हैव टू मेंटेन द सीरियल नंबर. पॉइंट नंबर 6, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन. क्या बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं? ऑफ कोर्स. So better you attempt each and every question even if you don't know the answer. If you get stuck in any question, leave some space for it and move on. Come back to that question when you are finished writing all the answers. अगर एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम दे दिया तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा. Point 6, word limit. This is very relatable. मैं हमेशा अपने एग्जाम में एक ओवर राइटिंग करके आती थी. हर क्वेश्चन में ओवर राइट करती थी. हर टीचर मुझे टोक के जाती थी कि सृष्टि बहुत ओवर राइट करती है. मैं तो करती थी, तुम मत करना. फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, you can increase the word limit. But in 1 marker, 2 marker, 4 to 5 lines are sufficient. Point 7, clarity and neatness. You should have a good handwriting to make good impression on the examiner. अगर कोई word या sentence गलत लिख दिया, don't do like this. Instead, do like this. Make a cut and move on. Your answer sheet must look clean. So point number 8 is the surprise. I will show you how you should actually attempt an answer. As you can see in this answer, I have made a table to differentiate between metals and non-metals. I could have write it in sentence also, but instead I made a table. You can do the same. Avoid writing long paragraphs because examiner do not have that much time to read the whole story. Instead, write your answer in points. And even if you are writing in points, give a subheading to that point. As I have shown, you can do one thing also. You can underline the keywords. Keywords will act like center of attraction of your exams. Examiner will automatically get happy after seeing your answer sheet if you do like this. Point number 9, don't use short forms. You are giving an exam, so write your answers formally. Avoid English and WhatsApp language. Let's suppose you are writing a sentence in which WHO comes. So instead of writing only WHO, I will recommend to write its full form also, that is World Health Organization. Point number 10,
आंसर ओनली वन इन चॉइस क्वेश्चन। आई डोंट नो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते उसके। ऊपर वाले आंसर में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई देन दे विल डिडक्ट योर मार्क्स, नो मैटर तुमने दूसरा वाला आंसर सही क्यों ना लिखा हो। So attempt that question in which you are more confident. Next point, draw diagrams, flowchart, tables wherever possible. They are literally score boosters and make your answer look heavy. Diagrams में labeling मत भूलना वरना marks और deduct हो जाएंगे. Use a pencil to draw diagrams. Next point, do not decorate your answer sheet. Avoid using pencil colors, sketch pen, watercolors, highlighters, stickers, pearls. Try to keep it simple. डायग्राम्स में भी कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. These things are not even allowed in the exam center. Point number 13. Draw lines after completing an answer. Why is it necessary? Because you are telling the examiner that you have completed the answer. In case your handwriting is fishy, then you should definitely go for this. As I have shown in this image also, what I used to do, you can go with the same. Leave 2 lines in case you add on something while revising your answer sheet at the end. Learn from topper's answer sheet. This is what I used to do when I entered in 10th class. I myself developed these habits after exploring topper's answer sheet. उनकी आंसर शीट से देखो कि वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, उनका क्या फॉर्मेट है। ऑल्दो मैंने तुम्हें सब बता ही दिया है बट तुम भी थोड़ी रिसर्च कर सकते हो. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल. पॉइंट नंबर 15 एंड द वेरी लास्ट पॉइंट, fill your details very carefully. Don't make mistakes while bubbling your answer sheet. एक भी लेटर की मिस्टेक हो गई तो तुम्हारा पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा. टेक योर टाइम. अपना रोल नंबर, पेपर कोड, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब कुछ ध्यान से लिखो. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लीस्ट इम्पॉर्टेंट भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी. मैंने सब कुछ कवर किया है. शायद ही तुम्हें इतना डिटेल में किसी ने बताया होगा. तो भाई बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में. अगर कुछ भी सीख के जा रहे हो यहाँ से एक भी चीज़ तो थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.